Hello guys, welcome back to Literary Tutorial. Today's topic is magic realism. So from the word only we can see the word is blend of two words, magic as well as realism. So I will be telling a lot about it. So stay tuned till the end because I would be telling you about the important works also. So you can get to know about the work, their authors and the important element included in it. Okay, so magic realism. Magic realism is different from a science fiction. It is a part of science fiction, but it is not a science fiction. It is a fantasy. Now, what is the difference between magic realism and fantasy? In fantastic literature, a new universe is introduced to the reader. That world is completely different from our. Means जो fantasy है उसमें कुछ भी real नहीं है. From the word only we can say it is all fantastic. In magic realistic literature, the world depicted is our. Right? The one major new component is magic. Magic is involved into our own world. Now, Beatrice, he distinguished magical realistic literature from fantasy literature based on differences between the three shared dimensions. Now, what are the dimensions? Use of antinomy, the inclusion of events that cannot be integrated into logical framework, use of authorical cannot reticence. Then, now we will be studying about the background, like who introduced it and when it was introduced. Actually, ये जो word था magic realism, ये एक German art critic फ्रांस रोज ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था when in 1925. And why he used it? To describe a new style of European painting. Actually ये literature में नहीं शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था painting के साथ. The label was first used in Latin America to describe the worldly and metaphysical fantasy of writers such as Argentine George and European Kafka. Carpentier, इन्होंने कैसे उनको बोला? इन्होंने बोला मैजिक रियलिज्म को एज अ मार्वेलस realism. Magic realism is introduction of magical devices or magic in general within a realistic story without any disruption of logic of the story. हम देखते हैं हमारे जो काफी जो हमारी टीवी सीरियल्स होते हैं या फिर हमारे जो मूवीज होते हैं उनमें भी एलिमेंट पाए जाते हैं. Definition: according to Flores, magic realism involved the fusion of the real and fantastic, or as he claimed, an amalgamation of realism and fantasy. According to Ray, it is an expression of new world reality which at once combined the rational element of European super civilization and irrational element of a primitive America. It is a genre, but not a genre by itself, because it is not regulated to a specific story or setting. By its nature, it must always be used in conjunction with another genre. मतलब ये अपने आप में नहीं एक genre है, but किसी के साथ मिलकर एक अलग सा genre बनाता है. When magic is blended with reality in a seamless way, right, then it becomes a magic realism. फ्रेडरिक जेमसन, इन्होंने अपने जर्नल क्रिटिकल इंक्वायरी 1986 में जो पब्लिश हुआ था उसमें टर्म को डिफाइन किया है स्ट्रेंज सिडक्टिवनेस. और ये जो टर्म है इट इज एसोसिएटेड विद कॉलोनियल हिस्ट्रीज एंड पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिक्स. मतलब पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड का ज्यादा इसमें महत्व है. अब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रियलिस्टिक setting. All the magic realism novel take place in the setting in the world that is familiar to the reader. मतलब हमारे साथ हमें वो अपना ही लगता है, ये नहीं लगता कुछ अलग सा हो रहा है. फिर मैजिक एलिमेंट है,
ठीक है, रियलिटी है बट कुछ मैजिकल भी है उसमें, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उसमें। देन क्रिटिक, जो ऑथर है ऑफन यूज मैजिकल रियलिज्म टू ऑफर एन इम्प्लिसिट क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, राइट। तो जो सोसाइटी है उसको एक क्रिटिकल एनालिसिस के व्यू में देखते हैं। द जॉनर ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक लैटिन अमेरिका, राइट। फिर यूनिक प्लॉट स्ट्रक्चर है इसमें टिपिकल नरेटिव आर्क है विद अ क्लियर बिगनिंग, मिडल एंड एंड। Then what elements do we involve in magic realism? Hybridity, irony regarding author's perspective, and authorial reticence. अब क्या central idea है? Significance of magic and myth, critique of rationality and progress. Most of the magic realistic texts have the great capability of myth and magic to create a version of reality. Another dominant theme of the magic realistic literature is questioning of reality by innovative language use, which raises doubt about the notion of reality. अब कौन कौन से ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने मैजिक रियलिज्म का यूज किया है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। तो अगर आपको पेपर में आ जाता है कौन कौन से ऐसे ऑथर हैं जिनका नाम मैजिक रियलिज्म के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल आ जाते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट इज 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड 1967, तो ये ईयर भी आपको याद करना पड़ेगा, गैब्रियल ने दिया था। इट एम्बेलम्स थ्रू अ सेंचुरी इन लाइफ ऑफ अ फैमिली इन एन्चेंटेड लैटिन अमेरिकन हैमलेट ऑफ मैकोंडो। तो ये नाम जो है Mokondo, that is very important. We can see in this magic carpet, fly, ghost, haunted villages, trickles of blood from killing climb stairs. मतलब बहुत कुछ ऐसा मैजिकल है इसमें। फिर ओकरे का द फैमिश्ड रोड, ये 1991 में आया था ये टेक्स्ट। इसमें भी मैजिक रियलिज्म है, हाइब्रिडिटी है, इलास्ट्रेशन ऑफ एंशियंट रिचुअल एंड कस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड पॉलिटिकल करप्शन है। इसका जो करेक्टर है मैडम कोटे इज इम्प्लाइड इन द करप्शन ऑफ मॉडर्न नाइजेरियन पॉलिटिक्स। तो अगेन इसमें आपको ये जो करेक्टर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन क्यूबन राइटर कारपेंटर्स द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड, it is again a fictional account of the uprising of slaves in Haiti, and it presents its struggle for independence. It ends with a mythical green wind that wipe away all the his traces. It leaves the reader with possibility that Tainul has merely changed his form as a vulture. He will continue protecting his own people. The changing into vulture is again a significance of magic into a realism where he is going to protect his own people. फिर इजाबेल का द हाउस ऑफ स्पिरिट जो 1982 में आया था। इन दिस नॉवल ही प्रेजेंट वेरियस मेमोरीज ऑफ 3 जनरेशन revealing the turbulent personal, political and social realities of Latin America. Right. Again, it is a blending of realistic and fantastic detail, adding an emotional resonant dimension to the characterization and to the theme of self-discovery through love. Then there is the ocean at the end of the lane. This is written by Neil in 2013. It is a novel about a man who reflects on his part after returning to his homeland for a funeral. Then we have Hercule, the Wind Up Bird Chronicle. इसमें क्या है? A novel about a man searching for his missing cat and eventually his missing wife in a world underneath the street of Tokyo. Laura का Like Water for Chocolate, ये भी उसी तरह का टेक्स्ट है। अदर देन दिस टेक्स्ट वी हैव सलमान रश्दी's Midnight Children 1981,
टोनी मॉरिसन का बिलवड है, उसमें भी हमें मैजिक रियलिज्म मिलता है. अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग है, अगेन वी गेट द मैजिक रियलिज्म इन दैट ऑल्सो. I hope you like my video. If you like my video, don't forget to subscribe my channel. And these are the very important text, their date and the writers. So keep noting it down and find out more about it. Thank you. Please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.